हाय स्वप्निल, क्या हाल है? बस all well, all well, all well. Good to have you here. Very good to have you here. Just वेरी waiting. प्लीज टू। Yes. Just waiting for Shivali to also join in. And I think या she's, डेफिनेटली। yes, she's also just fine. So I'll just be inviting her also. Yes. She's joining. Yes. Hi. Hey Hi, Shivali. Swapnil. Nice to see you. Meet you. Hi, Hitesh. हाय शिवाली, हाउ आर यू? Good, good, all good. So nice to have you all and have this So nice to have you discussion all here here. today. Yeah. Yes, 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 yes. Thank you for being here. And I'll not really waste a lot of time. I'll just get started. But hope you all had a good day. Not a very Yes. long day. And I hope it turns out to be a good Friday evening for all of us. But I will just start with some introduction, and I will first, I'll just give an introduction of Social Boat, then we'll come to you guys. So, for everyone who's on the platform, Social Boat is a platform for, if you are a creator, and specifically if you're a fitness creator, if you want to share your knowledge and passion with your audience, if you wanted to monetize what you're doing as a creator and as somebody who's interested in something, तो उसके लिए भी हमारा एक platform है. This is called Social Boat. We help people both as a platform and as a partner. As a platform, we offer tools to create a listing page, to collect payments, to automate notifications, so that as a creator time सारा save हो जाए. But also, you don't waste time on repetitive tasks. You focus on what is important and necessary. We also help you build a community where you can obviously, make the class more than just a live Zoom event happening. So there's a community, there's a feeling of community, there's a sense of purposeful, goal-driven, that a goal that we're all trying to achieve together. Then we're also building some tools like, launching fitness challenges together, launching with the community, launching online, sending your on-demand videos to the community, and so on and so forth. So this is what we're building as a platform. But as a partner, we do want to be more than just a platform to all the creators out there. We want to be a partner where people come and they also get advice on how do we go from A to B. And it is part of that process that we were trying to do. We're trying to build a community of creators itself, where creators learn from each other, where one first example of something that we're trying to do is getting successful people like you two onto our platform, having a candid conversation, just understanding how is it that you guys do what you do. And while the larger goal I think that both of you run is to helping people achieve a better, a fitter body, for example, if that's the goal. But there's a slight difference in the approaches both of you take. One has a yoga-driven approach, one has a more nutrition and fitness-driven approach, and which is why I think this would be really interesting and exciting if we could just have those conversations about you. So I will do some small quick introductions, but it will be great if both of you could also introduce yourself. So Hitesh, we've spoken a few times, and Hitesh is a very successful fitness icon as well as a professional dietitian. And Hitesh has successfully coached a lot of folks online. But Hitesh, over to you for a brief introduction. Thank you, Swapnil. Thank you so much. First of all, I'm really happy to be over here and really happy to share my journey with you all. And my name is Hitesh. I'm from Punjab. And actually, my fitness journey started with my own transformation when I was underweight a few years back. And as you know, a lot of people are underweight. बहुत लोग जो हैं आजकल या बहुत ज़्यादा overweight है, बहुत ज़्यादा underweight है. तो I was in the underweight category. तो बहुत कम weight था, बहुत ज़्यादा health issues थे. एंड बिकॉज ऑफ दैट कि हमें कोई नॉलेज नहीं थी खाने पीने की. टू बी फ्रैंक कि हम अपने आसपास भी देखते हैं, नो वन टेल्स अस कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्या न्यूट्रिशन है, बेसिक्स क्या. मतलब स्कूल में फिफ्थ सिक्स में पढ़े थे प्रोटीन का, लेकिन वो समझे नहीं थे. तो उस चीज की वजह से हैबिट्स कुछ खराब थी, खाने पीने का पता नहीं था. इस वजह से मैं बहुत ज्यादा अंडरवेट था, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था. लेकिन थैंक्स टू माई फादर जिन्होंने 8 साल पहले अपना फैट लॉस किया. ही लॉस्ट 20 kgs इन 6 months एंड विद प्रॉपर डाइट, विद प्रॉपर न्यूट्रिशन. एंड ही वाज माय कोच जिन्होंने मुझे गाइड किया. ही टोल्ड मी कि कैसे आई नीड टू गेन माय वेट बिकॉज आई वाज रियली अंडरवेट. मतलब आई वाज दैट. लेकिन जो मेरे डिफिकल्टी थी कि मेरे को कपड़े भी नहीं अपने साइज के मिलते थे, क्योंकि आई वाज नीदर इन द एडल्ट्स नीदर इन द टीनेजर्स. तो वो भी बहुत डिफिकल्टीज थी. तो उन्होंने मुझे गाइड किया. ही मेड माय डाइट प्लान
एंड उस वजह से मैंने अभी तक अपना 20 kgs मसल वेट गेन किया। एंड ड्यूरिंग दैट जर्नी बहुत कुछ सीखा, बहुत सी गलतियां की। बिकॉज जब तक हम लोग गलती नहीं करेंगे हम सीखेंगे नहीं। हम पहले सुनते थे, लेकिन अभी जब हमने ये चीज को किया तो ये सीखने को पता लगा कि यू हैव टू मेक मिस्टेक्स इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल। एंड फेलियर पार्ट, तो वो चीज करते करते आज एक बहुत अच्छी हमारी कम्युनिटी है और बहुत लोगों की हेल्प कर रहे हैं, बहुत लोग बहुत ज्यादा फिट हो रहे हैं। एंड मेन मैसेज ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करें कि अपनी सेहत को लेके हम लोग सीरियस हो, अपनी हेल्थ को लेके सीरियस हो। बिकॉज ये बॉडी का कोई स्पेयर पार्ट नहीं है, राइट? हम लोग घर ले लेंगे, कार ले लेंगे, इनफैक्ट जॉब चेंज हो जाएगी, लेकिन ये जो हमारी बॉडी है तो एक ही रहेगी। तो ये हमारा मैसेज है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं कि बस अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं और क्या हम करके अपने आप को फिट करें। सो दैट इज माय जर्नी, ब्रीफ डिस्कशन। या Thank you so much, Hitesh. I think it's a lovely journey. We've known that. Shivali, coming to you now, and we spoke yesterday, but I know you are a global yoga trainer, a wellness expert, a lifestyle educator. You were telling me yesterday that your aim is to inspire purpose-driven women. But I will put the stage to you now to give a small introduction about yourself and just tell everyone else. Thank you, Swapnil. First of all, that's so inspiring, Hitesh, to know about your journey. And exactly, we don't know what we are. I mean, we only have one body, and it's our responsibility to take care of it and to feel better. That's why I named my page "Live Better" because if you don't have your health, you will never feel better. I mean, kuch na kuch, kuch na matlab kharab to. You're like things will go wrong in your life and you don't know how to make it better. So it's only with health you can actually become. So my journey is I used to work in a corporate. I live in Bombay now and I've been in Bombay for the past 10 years and I did my masters. I was working in a corporate job. I was seemingly very successful and but inside I gained like 20 kilos. I had acne and I had a stressful life. I wasn't sleeping right and exercise तो मैंने करा ही नहीं था. मतलब I used to not exercise at all. And and I could see that things are going wrong. This is not how I'm meant to feel. So one time I just thought, okay, I'm gonna quit. I'm gonna take a sabbatical. This is too much anxiety happening in my life. So I took a sabbatical. I did a yoga training course just because I mean I've been told कि करने से like you get आपको शांति मिलेगी. So I did a yoga course just for शांति कि मुझे थोड़ी शांति चाहिए लाइफ में. And then when the yoga course happened for me, I got so much shanti. I actually realized the importance that it's possible to be happy also in life and enjoy life. And ऐसा नहीं जरूरी नहीं कि किसी एक चीज के पीछे भागते ही रहो. So and after I finished my yoga course, I started to teach. It started out slow. And then now, after almost 1.5, 2 years, it's here where I am, where I'm teaching globally students like all over the world, and it's been going good. So that's how my journey is, and that's how it's begun. And I really I really believe in helping others to recognize how important it is to to have a proper health and have a proper lifestyle so that you can be happier in life. Life is not about just being stressful all the time. Correct. Yeah, I think fair point. And something we don't understand and we don't value till we've achieved that is that having a fit body has a lot of impact on how our mental state or how we are feeling during the day and how we are approaching a lot of things during the day. And we don't realize that till we actually achieve that or actually do that ourselves. And it's something I've personally realized at some stage in my life where when I started playing regularly, I started seeing it added to my overall the way I was looking at the day and all of those things also. But that said, we keep getting, and as we started this started social board, we keep getting a lot of messages from people ki yaar, it sounds cool, we know we have some passion, we have some knowledge, but करना कैसे, ये कैसे, कहाँ, कब से शुरू करें, ये complications क्या क्या है इसके around की. So there are a lot of questions, and as you guys know, the same purpose for why we're all together today. I just want to get started, and Shivali, this question is for you. Why don't you just tell us ki the basics of getting started as a class is having some audience online. How do you, when you started off, how did you think of starting the
the first customer, वो first आदमी कैसे आया आपके Okay. पास? Or, you know, So how was the first time you taught? I'll be really honest. I used to get really overwhelmed looking at all the influencers. सबके लाखों followers. Even Hitesh has such a huge amount of followers, and and I'm struggling to make content here. And it was very hard for one whole year. I did not have any followers. Like I only had 300 log following me. उसमें भी I I'm there. started. So उसमें I used to just post yoga के videos because I was into yoga, and I used to teach classes but online start नहीं करा था, and then lockdown happened, and then my physical classes stopped. So you have to scramble around. So I did not know what to do. So I got this one student, and she said, I want to learn from you. So मैंने कहा ठीक है चलो, let me start a group class. And then I started a group class. मैंने पूरे posters बनाए, पूरे मैंने उसको Instagram पे होता है ना, like you make ads. मैंने उसका ad बनाया. And then when the day came, that girl also did not join. So for the first 2 weeks, and one of my school friends, she said, okay, I want to do your class. So there was only me and her for first 2 months. It's very slow. I'll be really honest. It's a Okay. process. Okay. You Yes. have to be consistent. So Yes. for the first 2 months, it was only her, and slowly, I got few more students, and then she spoke around, that she spoke out to other of our friends, and then Instagram maybe then, I started to post about her lifestyle and her journey, how it has going. And of course, I started to post more. So धीरे then it grew. Then I got 3-4 more clients, and then slowly it became like a community of, now I teach 20 plus 40 students at one go. And it's a process, but it starts very slow. I'll be very honest. For 6 months, I was like, oh my God, did I do the right thing? Leaving like a full-fledged job, career for this? Like I'm not earning any money. So, but yeah, you have to stick to keep on, be at it. That's what I would suggest. I think that's fair. And so I'm taking your point of, having patience, getting the first client, doing a good job. Gradually things will start moving for you, and gradually your community will start building. And Hitesh, इसी पे I want to come to you and understand from you कि is it how beneficial for you, for example, it was in your journey to have a community, and what stage did you think एक strong community होनी चाहिए? क्या वो was it before ये सब start करने से पहले, did it come बीच में कभी, या वो क्या stage है? Okay, so community का जो role है, that I got to know after lockdown, to be honest, because last day जब lockdown हुआ, we were stuck at home. कोई कुछ काम नहीं था करने को, and सब कुछ बंद था, as you know कि पहले starting में तो बहुत कुछ था. तो then we started our classes on Zoom app, because उससे पहले जो majority था हमारा offline था. मतलब people used to come our office, used to come our center, nutrition center, and we used to guide them, we used to make their diet plans. तो वो सब तो चल रहा था, लेकिन जो कम्युनिटी की सेंस थी वो एक मिसिंग थी, कि मतलब 1-on-1 तो चल रहा था लेकिन कम्युनिटी नहीं थी. बट थैंक्स टू लॉकडाउन, कि जिसमें हमने विदाउट एनी डिले हमने जूम कॉल सीखा, पहले खुद सीखा, एंड उस पर स्टार्ट किया, धीरे धीरे करते करते फिर हमने कम्युनिटी बिल्ड की. अभी जो भी हमारे कस्टमर्स है, दे आर ऑनलाइन. चाहे कोई हमारे मेरे ऑफिस के पास ही है, चाहे कोई, वो भी हमारा ऑनलाइन कम्युनिटी का हिस्सा है. लेकिन जैसे शिवाली ने कहा कि स्टार्टिंग इज रियली स्लो. तो अगर मैं अपनी ऑनलाइन, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग ऑनलाइन से ही किया था अपना इंस्टाग्राम पे थ्रू जो डाइट प्लान वगैरह, तो मुझे याद है कि अप्रोक्सीमेट 5.5 ईयर्स पहले, मतलब 5-5.5 साल पहले मैंने पेज स्टार्ट किया था अपना, जिसमें मैंने आई स्टार्टेड कि चलो मैं हेल्थ और फिटनेस के बारे में पोस्ट करना शुरू करूंगा. तो मतलब 5 साल की वो कंसिस्टेंसी है जो आज इतना ज्यादा लोगों की हम हेल्प कर पा रहे हैं, इतनी बड़ी कम्युनिटी जो बनी है, इसी वजह से है. क्योंकि वी स्टार्टेड फ्रॉम स्लो, कि छोटे से स्टार्ट किए, एंड पेशेंस, कंसिस्टेंसी, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं. और इसके बिना तो आजकल वैसे अगर हम नॉर्मल बात भी करें, शिवाली को पता होगा कि मुझे जल्दी सीखना है या मुझे जल्दी वेट लॉस करना है, तो वो जल्दी वर्ड जो है वो बहुत कुछ बहुत खराब करता है. तो हमें वो जल्दी नहीं करनी. कोई भी चीज करनी तो उसके लिए टाइम चाहिए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी. तो वो चीजें हैं, अगर हम उसको रेगुलर करेंगे तो आई बिलीव एनीवन कैन स्टार्ट अ फिटनेस कम्युनिटी, एनीवन कैन डू एनीथिंग. बस टाइम, पेशेंस, कंसिस्टेंसी जरूरी है. और उसी के चलते चलते हमने आज अपना इतनी बड़ी कम्युनिटी बिल्ड किया ऑनलाइन, एंड बहुत लोग फिट हो रहे हैं, बहुत लोग हेल्दी हो रहे हैं. लाइक शिवाली टोल्ड की 20-40 स्टूडेंट्स आर देयर इन अ ग्रुप बैच. सो दैट इज अमेजिंग. मतलब कि पहले 2 महीने अगर मैं और मेरा फ्रेंड हो सिर्फ,
और मैं कहूँ कि तू मेरे साथ चल जिम, मैं तेरे को कराऊंगा ट्रेनिंग। और हम दोनों हो तो बहुत ज्यादा एक फ्रस्ट्रेटिंग एक वो फेज होता है कि यार हो तो रहा नहीं है, छोड़ो परे। तो वो बहुत सी थॉट्स आती हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी इज समथिंग वी शुड ऑल डू। कोई भी काम करना है कंसिस्टेंटली करो। योगा सीखना है तब भी कंसिस्टेंसी चाहिए, वेट ट्रेनिंग करनी है तब भी चाहिए, एंड वेट लॉस करना है, गेन करना है, कोई भी आपका गोल है अपार्ट फ्रॉम फिटनेस, हम कोई भी काम करें, जॉब करें, बिजनेस करें, हर चीज में कंसिस्टेंसी जरूरी। तो उस चीज के ऊपर हम फोकस करें तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमारे पास दो स्ट्रॉन्ग क्वालिटी ट्रेट्स आ गए हैं, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी फ्रॉम बोथ ऑफ यू एज वी गेट स्टार्टेड। बट हितेश, मुझे आपसे ना एक चीज और पूछनी थी। आई सॉ वंस ऑन योर इंस्टाग्राम स्टोरी एंड आई एम नॉट श्योर if this is the right question also, but there were 1,000 participants on that Zoom call. वो tell me about that. How did that happen? कि because that is a massive number and I just want to know more कि वो इतना कैसे, where did this massive number come from? लाइक आई टोल्ड यू, कम्युनिटी जैसे हमने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था, तो आई रिमेम्बर जो जूम कॉल में हमारी स्टार्टिंग हुई थी दैट वाज 30 40 50 पार्टिसिपेंट्स। तो धीरे धीरे करते करते हमारा नंबर इंक्रीज हुआ। एक्चुअली में हमारा जो हमारे अलग अलग टीम्स हैं, अलग अलग लोग हैं हमारे जिनको हम फिट करते हैं तो आगे की आगे हेल्प होती है, जो मतलब कम्युनिटी बिल्ड हो रही है। तो जो हमारे ऑनलाइन कस्टमर्स आ रहे हैं, जो ऑनलाइन ज्वाइन हो रहे हैं, तो वो एक दूसरे को देख के इतने ज्यादा मोटिवेट होते हैं, दे ट्राई टू मेक देमसेल्फ फिट एंड दे आल्सो ट्राई टू मेक द फैमिली मेंबर्स। क्योंकि हम हर किसी के 2 या 300 या 400 लोग हम हर किसी के कॉन्टैक्ट में होते हैं, राइट। और अगर कोई चीज मेरे साथ अच्छी होगी तो मैं चाहूंगा कि यार मेरे जो जान पहचान के दोस्त है या रिश्तेदार, उनके साथ भी वो चीज अच्छी हो। तो इसी तरह रेफरेंस एंड एक दूसरे का मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, ये सब चीजें जो मैटर करती हैं, धीरे धीरे हमारी कम्युनिटी बिल्ड होती गई। और जो 1000 है वो मैक्सिमम लिमिट है, हमारी जो कम्युनिटी उससे ज्यादा बड़ी है, तो वो 1000 से ज्यादा आ नहीं पाते एक टाइम पे। तो उसके लिए भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि एक बड़ी हमारी एक मीटिंग हो जिसमें हम सारे जितने भी हमारे 1500 2000 जितने भी हमारे कम्युनिटी के मेंबर्स हैं सभी उसमें ज्वाइन हो। तो मतलब वही कि अगर किसी एक बंदे के साथ कोई अच्छी चीज होती है तो वो आगे बिल्कुल शेयर करता है, और वो जो रेफरेंस है दैट इज वेरी वैल्यूएबल। और तो वो चीजों के ऊपर लोग ज्यादा काम करते हैं। Very cool, sir. Very cool. Very cool. I think that's very inspiring for me to see as someone who's just starting off, you know, trying to build products for the creator space. Ki someone has been able to build a community so strong, so and so well engaged also. ठीक है, very inspiring. Thank you so much. शिवाली, आपसे मुझे I wanted to know, and you know, I know you mentioned once कि Reels has been you know, a boom, for example, and I want to understand from you specifically ki, what do you think, you know, among different components on Instagram, and I will try to limit this on Instagram, maybe we can talk about YouTube as well, but when trying to find an audience, specifically when it is about reaching out to new folks, what would you suggest somebody, you know, someone who is one of the content creators? And we had a question that was posted to us on a DM also कि यार reels बनाए ज़्यादा, stories करें ज़्यादा, अपनी बातें करें ज़्यादा, you know, या how to वाली videos बनाए ज़्यादा, what works, what does not work a lot, and maybe if you can just tell us. Okay, I'll just share what I have been doing, because I don't follow any strategy per se. I should do that, but then the only thing that I think that what you can do is like be genuine, be, you know, what you are, be honest. And I think that's what people connect with. I've been very honest about my life journey, about where I come from, you know, how my life was. Like I was super chubby, you know, like I was not fit. And then how that transformation, it's almost like a transformation happened by being not at all into fitness to just doing fitness and taking this life on. And, you know, that's pretty, I mean, I want to say that's pretty inspiring also for some. And I want to share that across, you know, it is possible to start at any age, at any time to make yourself better. So, and I try to be very open about my life, and I'm very open on, you know, I'm very open on stories. I post about all the things that go on in my life so that they know that, okay, they have my trust, and they can also trust me because I'm just like them. So that is one thing. Be yourself, be genuine. I also try to, you know, try to help people in a way which I know that they can use. You know, if I'm not there, so they can do this on their own. So I try to post a lot of beginner friendly stuff, even though I do quite a bit of
advanced postures, but I don't post about that much. I post a lot of beginner friendly things so that, you know, छोटी छोटी जैसे constipation हो गया, backache हो गया, headache हो गया, all these things, you know, that people can really pick one thing. अगर एक चीज भी उठा लेना, चलो ठीक है 10 मैंने लिखा है, अगर 10 में से एक भी चीज अगर उनके दिमाग में बैठ गई ना, एटलीस्ट उनकी हेल्प हो गई. So that is what I try to post about. And it's also a balance. Like I post a lot of stories about my life, about anything that I find interesting, about helping them, small things. And also, I also write a bit about my journey and how it can inspire them. So it's a balance of all 3 to 4 things. Reels have been doing very well. And I saw, I mean, because of few of my reels, which actually became a bit, you know, थोड़े से views उसको मिल गए. So उसकी वजह से I saw followers के rise surge, which is good. And you know, I quite enjoy making reels now. When I started, you know, it was like कुछ भी नहीं आता था मुझे. I did not know how to edit. I did not know how the lighting works. But again, it's a process. You keep at it. अपने आप, you know, it happens for you. Okay. So. Okay. That sounds good. And I was also seeing one thing, you know, I was just going through Instagram profiles and I saw, and this is common to both of you, you know, there's a lot of positive testimonials that people are sending. Ki, wow, for example, this changed in my life. Thanks for helping me out with this. Thanks for guiding me to this. For example, I've seen this a lot. Yeah. And, you know, I just want to know one thing. What is that one edge, that one thing आप दोनों की classes में, जो आपको लगता है कि यार, this is my special flavor or this makes me different from what, for example, this makes learning with me more special. What is that one thing? And maybe Hitesh, आप थोड़ा सा बता सकते हैं उस पर, and then Shivali, you can also tell. But वो एक चीज क्या लगेगी? ओके, तो उसके लिए तो मैं अपने क्लाइंट से पूछूंगा कि क्या चीज है जिसकी वजह से दे आर कनेक्टेड विद मी. लेकिन आई ट्राई टू डू एवरीथिंग. जैसे शिवाली साहब ने पूछा कि क्या चीज आप ज्यादा करते हो, तो दैट इज अ बैलेंस ऑफ एवरीथिंग. इंस्टाग्राम ने आपको स्टोरीज की ऑप्शन दी है, पोस्ट की ऑप्शन दी है, रील्स की ऑप्शन दी है, वीडियोस की, आईजीटीवी की ऑप्शन दी है. तो हर चीज यूज करो. जो नए कंटेंट क्रिएटर है, आई वांट टू टेल यू दैट कि हर चीज यूज करो. आपको कौन सा भी रोक रहा है? एक्सपेरिमेंट करो. हम आज भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. कभी मेरी रील के बहुत ज्यादा व्यूज आए थे, कभी कम आ जाते हैं, कभी पोस्ट के बहुत ज्यादा व्यूज आए थे, कभी वीडियोस के बहुत ज्यादा व्यूज आते हैं. दैट इज एल्गोरिथम. हमारा काम है कि हम लोग उसको पोस्ट करें एंड ट्राई टू गिव मैक्सिमम नॉलेज. कई बार क्या होता है कि स्टार्टिंग में हम लोग सोचते हैं कि अगर मैं यहाँ पे सब कुछ बता दूंगा तो लोग मेरे साथ आएंगे नहीं, जुड़ेंगे नहीं. तो दैट इज अ मिथ. हम लोग जितना ज्यादा लोगों में नॉलेज देंगे उतने ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे. एंड आई ट्राई टू मेक मैक्सिमम इंफॉर्मेटिव पोस्ट, कोई ना कोई तरीके की ट्विस्ट के साथ, चाहे वो रेसिपीज हो या वर्कआउट्स हो या कोई नॉलेजेबल पोस्ट हो. लाइक शिवाली टोल्ड की शी यूज्ड टू मेक बिगिनर पोजेस. तो इस तरह की हम लोग पोस्ट क्रिएट करते हैं ताकि लोगों को नॉलेज मिले एंड दे एक्चुअली वो कुछ ना कुछ चेंज करे अपने आप में, ताकि उनका एक अच्छा रिजल्ट आए. तो वो बहुत जरूरी है. स्टेप लेना बहुत जरूरी है, और जो वही सबसे ज्यादा मुश्किल होता है. एंड अगर वो लोगों लेंगे तो दे विल डेफिनेटली चेंज देमसेल्फ फॉर द बेटर. तो आई थिंक दिस इज माय पॉइंट कि हर चीज मैं करता हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैल्यू मिले. Makes sense. Totally makes sense. Shivali, what is that your USP? I mean, ये तो अपने मुंह से तारीफ हो गई, पता नहीं. I don't know. Yeah, I have to ask my students, but I feel I try to make my classes very fun and entertaining. Like I don't just come, चलो आज Trikonasana, Bhujangasana. I don't do all that. I try to, I mean, add like a fun element. I plan my classes in advance. And, you know, I used to do it a lot. Abhi thoda sa, because, you know, now with practice. But I try to, you know, keep them entertained. Ki, you know, kabhi kuch hold kara diya. So, hold karate unko, I try to think of a joke in my head. And I crack a lot of jokes in my classes. Pata nahi unko funny lagta bhi hai ki nahi. So it's that, you know, make it entertaining, make it fun. And, you know, and I try to do different things. And build on it. So, you know, kabhi ek pose le liya. तो उसमें slowly उनकी growth भी I try to see कि how they are growing. So if they see, if a student is seeing their growth, of course they'll stick around. Of course they'll like it. You know, even I would want, you know, कि मेरी भी growth, personal growth. So I want the same thing for my students, that they also grow in my classes. So I specifically focus on one thing that they can grow in. So that is another thing. So yeah, that's how it is. And whatever happy things that I think yoga speaks for itself, and yoga and fitness. Like agar kuch bhi aap workout karo, you're like, you get those happy hormones. So I think that's what works in our favor, that they are happier and then they write about it. So
That's Very the good. thing. Good. And how much does that also impact, obviously people, when people come to you, इसका एक positive impact आपके लिए तो होगा ही. You feel better about what you are doing, right? But how much does it also impact you in the way that, getting more users also? Because I see when you, both of you have consistently shared transformation stories, testimonials, बार consistently share किया. And is that something, a strategy also to get people, for more people to see and them to get, for example, come on, join your classes? Hitesh, you want to speak first? I believe कि one good testimonial is equal to thousands or lakhs of budget of advertisement. अगर हम लोग एक जगह पे लाखों रुपए खर्च रहे हैं एडवर्टीजमेंट की, दैट वोंट इफेक्ट दैट मच अगर हमारे एक कस्टमर का एक अच्छा रिजल्ट आएगा. सो दैट इज जैसे वो मेन जो बेसिक मैसेज दैट इज टू अवेयर पीपल कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में मैसेज आए. या आप कोई भी वर्कआउट करो, लाइक हमारे भी कुछ क्लाइंट्स हैं जो योगा कर रहे हैं काफी साल से, एंड अलग अलग तरह के वर्कआउट्स हैं, अलग अलग तरह के डाइट प्लान. तो कुछ ना कुछ हम लोग करें, अगर अपनी सेहत के लिए, अपनी बॉडी के लिए करेंगे तो दैट इज अ पॉजिटिव मैसेज. हो सकता है कभी कोई क्या होता है कि कई बार कुछ लोगों का मैसेज आता है कि आपने उस बंदे का ट्रांसफॉर्मेशन पोस्ट किया था एंड उससे मैं मोटिवेट हो गया, मैंने भी स्टार्ट किया, मैंने इतना अच्छा मेरा रिजल्ट आया है. सो यार एक तीर से दो निशाने, क्या बुरी बात है. Yes. Very good. Very good. Makes sense. Shivali, do you have a thought there? Yeah, so I'll tell you, I'm, because I'm still a beginner in this, and I really wanted to give an output, like a point of view of a person who's just starting, because बहुत लोगों ने achieve कर लिया है, then you feel like, oh my God, कैसे करा? But they have been at it for 5 years. Like Hitesh has been at it for 5 years, and of course that takes time, that takes patience. But you can lose your patience in the first 2 years. So इसलिए I wanted to have this talk also, that you stick to it and it all works out. So testimonials, honestly, अगर 50 लोगों की क्लास करी है, उसमें से 5-6 लोग will only write for you, है ना? So इतने लोगों का मतलब, सब लोग ऐसे नहीं होते हैं. So testimonials is okay. It's a good way to, and it helps me. It keeps me, on track. It keeps me happy. Like मुझे, like I would want to hear कि उनको सब, if they're liking what I am providing them or not. I share them on my page because, कहीं पे किसी को अगर connect हो गया कि, this is what they really are suffering or they have been going through, and this helped them, like Hitesh said, if this helped one person, and if they pick up on that, and if they get inspired, not necessarily they come to me, it's fine. Even if they pick up yoga or they pick up fitness just by getting inspired from that testimonial, then that's my job is done. And even if I change one person's life, that is my job is done. So that is what, इसलिए I share it, इसलिए, I try to, I also try to inspire लोगों को by other की story से, क्योंकि अभी, जितना inspire करोगे उतना फिर, this will grow into the universe. इसीलिए, yeah, it helps. But it's not the main thing, क्योंकि बहुत ही कम आते हैं, honestly, मुझे तो बहुत कम आते हैं, but come in the sense, because सब लोग नहीं करते, लेकिन yeah, it's a good thing to share it on your platform as well. Okay, very cool. I have one question which is around, for example, I used to go to gym pehle, and I play an offense sport also. So, and there are people around in the gym, and एक मन करता है, for example, जाने का, ठीक है, when you go to that gym. How do you solve that in an online class? Where does that there's a sense of community and the sense of seeing people around you in a physical space, and where does a virtual class have that limitation? If it has, how are you guys solving it? And Hitesh, अगर आप थोड़ा सा इस पे you can also touch base कि कैसे आप ये चीज अभी हैंडल कर रहे हैं. like जैसे मैं बताऊंगा कि आजकल मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर कनेक्टेड ऑनलाइन. मतलब लोग घर से बाहर निकलने से ज्यादा घर पे बैठना प्रेफर करेंगे, एंड यू कैन सी कि हर तरह की एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन अवेलेबल, चाहे वो इन्वेस्टिंग हो, चाहे वो खाना डिलीवरी और फूड डिलीवरी हो, इवन की फिटनेस, कई तरह की फिटनेस एप्स आ चुकी हैं जहाँ पे आपको वर्कआउट प्लान भी आपके घर पे या आपके फोन पे आ रहा है. तो जो आने वाला टाइम है, आई थिंक ऑनलाइन इज द नेक्स्ट फ्यूचर, क्योंकि फिजिकली जैसे हमने पिछले 1.5 साल में देखा कि फिजिकली हम लोग तो बहुत ही कम मिले हैं, बट ऑनलाइन एवरीवन इज कनेक्टेड. हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, एंड दैट शोड मी ग्रोथ, कि हमारी जो ग्रोथ पिछले 1.5 साल में हुई है वो उससे पहले नहीं हुई. तो ऑनलाइन एक तो इजी बहुत है, एंड हर जगह अवेलेबल है.
like I have a lot of clients who have really hectic jobs. Like Shivali is also in the corporate. तो corporate की जो life है that is very hectic. राइट, आपको सुबह जाना है, रात को वापस आना है, फिर सुबह जाना है, तो वो जो सर्कल है उसमें लोग कभी कभी टाइम नहीं निकाल पाते अपनी सेहत के लिए, अपने कोई भी चीज करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकाल पाते। लेकिन अब उनको पता है कि यार मेरा ये टाइम फिक्स है और मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दैट इज ऑन माई फोन, दैट इज ऑन माई लैपटॉप, तो दे विल डेफिनेटली कनेक्ट। एंड ऑनलाइन कनेक्ट का एक बेनिफिट और है कि आप सिर्फ अपने एक रीजन या एक सिटी के लोगों से मिल रहे हैं, आप पूरी दुनिया के लोगों से मिल रहे हैं। हर तरह के चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, हर तरह का कल्चर देखने को मिलेगा। लाइक वी हैव क्लाइंट्स फ्रॉम हिमाचल, फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम कर्नाटक, इवन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया, राइट। तो हर तरह के चैलेंजेस उनको देखने को मिल रहे हैं। और क्या चैलेंजेस, किसी को कोई अगर यूएस में तो उसको क्या चैलेंज आ रहा है, कोई इंडिया में उसको क्या चैलेंज आ रहा है, तो ये सारी चीजें जो है हम लोग अच्छी तरीके से डिस्कस कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो आई बिलीव कि ऑनलाइन जो है वो ज्यादा इजी है एंड ज्यादा इफेक्टिव है लोगों का माइंडसेट और लोगों की हेल्थ और फिटनेस को चेंज करने में। ठीक है, ठीक है, बट आई थिंक यू आर राइट कि जब व्हेन वी आर कनेक्टेड, एंड कनेक्टेड से आई वुड से कि सम फॉर्म ऑफ अ कम्युनिटी बीइंग अराउंड विल टेक्स दैट, यू नो, एड्स दैट वैल्यू आल्सो, कि अभी मेरे को इंटरनेशनल लोग भी मिल सकते हैं, मेरे को कश्मीर का भी कोई मिल सकता है, मेरे को केरला का भी कोई आदमी मिल सकता है, आई कैन बी डूइंग इट टुगेदर विद दोस गाइस। शायद इन माय ऑफलाइन जिम इट इज ओनली माय लोकेलिटी, तो व्हाट गेट्स रिप्लेस्ड विद समथिंग एल्स दैट इज कूलर आल्सो probably. And for this, Shivali, I just wanted to also ask you one thing, which was, you know, it's extension to the same question, which is around some people asked me when we spoke to some fitness creators कि यार लोग बोर तो नहीं हो जाएंगे 30 दिन में लगातार ऑनलाइन होंगे, तो you know, how do you handle that वाला bit also कि 30 days folks coming on a Zoom call, ठीक है, how do we handle कि is that a concern also? Maybe it's not, but is that a concern also कि लोग बोर तो नहीं हो जाएंगे? So you can also get bored in a gym doing the same workout again and again. So it all depends on your mindset. But Yes. I would say that online is picking up, and online is an excellent way to do your workouts because you know, it's become so much easier. I have students in US who stay in suburbs. Like उनके लिए कहीं पे जाके workout करना is like 1 घंटे का process. So it's very easy for them to just switch on and आके, you know, like you finish your workout, you don't even have to go anywhere. घर पे बैठे बैठे हो गया, and you are in your own personal space. You are comfortable. Of course, if you want that you know, that community matters, but community you can do with other things also. Like you have your friends ka community. I am a big supporter of having a community, but then abhi, if there is no other option, online works, and online has become way easier and way easy to do. Also, like you said कि bore हो जाएंगे, so it depends on the teacher, it depends on your mindset also. Bore तो life में होते ही हैं, कभी ना कभी हो ही जाएंगे, लेकिन then you have to do things that make you energetic, that make you like feel alive. And I, as a teacher, I try my best to involve like some fun elements in my classes, something new every day, कुछ ना कुछ नया, ताकि, you know, they stay active and they stay enthusiastic. And honestly, like I mentioned, if you see your personal growth, that तुम्हें अगर I'll give you an example. If a person was not able to touch their hands to their feet, and if they see कि अरे after a week I can touch my hands to my feet, so they'll be मतलब inspired कि अरे, so you know, like I have to try a bit more. So this comes from within, so they won't get bored. I mean, I've seen this in my yoga practice also. I don't get bored even if I do the same thing again and again, because there's always something new to learn, something new to do, something new happening. Makes sense. Very good. We also have some audience questions coming in which may, and let's also start taking them as they come in. And I'd like to say this to everyone who's also listening to this, that, you know, guys, please, if you have any questions, we've got 2 amazing people out here and we've got them for some more time. Please drop in your questions. ये लोग अभी सब questions के answers करेंगे. One question I saw Rahul had posted, which was around, you know, posture, for example, is correcting someone's posture or is suggesting the right posture. You know, how do you handle that as a challenge, or is it even a challenge during an online class? How do you handle that challenge of correcting somebody's posture if the postures are incorrect during via Zoom, for example? Specifically when it's a group class. In an individual class, I can see it happening. Would any of you want to take this? Hitesh, if you would want to, you know, just take this. Yeah, Shivali can go first. Like, yeah. So what I do, I spotlight that person. I mean, I focus, like in individual focus. I
try to give a spotlight that person. I keep on demonstrating how they could correct their postures. And of course, it's all about being aware of your whole body, not being dependent on somebody else. Like even in a gym, तुम्हारा gym trainer एक बार तुम्हारा posture ठीक करेगा, उसके बाद तो you only have to do it by yourself. You only have to be aware कि क्या तुम्हारे लिए work कर रहा है, क्या तुम्हारी alignment है, what is working for you, and how well you can lift in this alignment and things. So in the end, मैंने एक बार explain करा, एक बार, दो बार, 10 बार भी explain कर दूंगी मैं. But in the end, they have to be aware and observe. So what I do personally, I spotlight them. I tell them aisa, like you have to be like this. You have to place your hand here. I give them all the cues, and they only pick up. So, and it works out for me like that. Very cool, very cool. Yeah. I think that's a very cool hack, spotlighting on Zoom, so that the person also gets notified. And the person who is spotlighted will also learn, plus the others who are watching will also learn. Okay, fine, this person is doing that wrong, so I have to correct this. Because looking at giving your attention to like anything also helps you out in the end, right? So if you look कि अच्छा इसका पैर थोड़ा सा अजीब हो रहा है, so I have to also correct this for me. Yeah, so that's how also it works. Very cool, very cool. I also saw one more question that's just come in from Shipra. Yes. What do you think about your why when it comes to starting something new? Hitesh, आप ये लोगे question? Yeah, so why my why for the first time was कि मैंने अपने आप को fit करना, अपने आप को healthy करना. तो मेरी first why that was that. And जब मैंने अपने ऊपर change लेके आया, I started having some progressive results. मेरा अच्छा change हुआ. तो then people started asking me, right? तो हमने कुछ लोगों की हेल्प की, एंड दे हैड वंडरफुल रिजल्ट्स. जिन लोगों ने फॉलो किया ऑब्वियसली, एंड क्योंकि हर कोई फॉलो नहीं कर पाता, सिंपल सी बात है. अगर आप जैसे शिवाली ने बताया, अगर 50 लोग हैं तो 5 लोग ही टेस्टिमोनियल लिखते हैं. सेम चीज वैसे ही है. अगर आपके साथ 50 लोग हैं तो उसमें से 10-20 या कुछ परसेंटेज लोगों की जो एक्चुअली में उसको फॉलो करके अपने आप के ऊपर रिजल्ट लेके आएंगे. एंड जो उनका रिजल्ट आने के बाद जो उनकी लाइफ चेंज होती है, एंड द मैसेजेस दे शेयर विद अस, दैट इज माय वाई. कि हम लोगों की जो हेल्प कर पा रहे हैं, जो लोगों की लाइफ चेंज हो रही है, मतलब लिटरली लाइफ चेंज हो रही है. जो लोग पहले बेड से नहीं उठ पा रहे थे, या काम नहीं कर पा रहे थे, या उनके मेडिसिन बहुत थी, या बहुत तरह की जो इश्यूज फेस कर रहे थे, और मतलब नॉट जस्ट फिजिकली बट मेंटली ऑल्सो. लाइक अ लॉट ऑफ पीपल वेंट इनटू डिप्रेशन लास्ट ईयर. कि जब से लॉकडाउन हुआ, काफी लोग डिप्रेस्ड हुए, काफी लोग सैड थे, एंड दे वर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ सपोर्ट. लेकिन वो जो चीजों में लोगों में चेंज आया, that just motivated me a lot, that inspired me a lot. And हमारे बहुत से रिजल्ट है जिनको देख के हम लोग खुद इंस्पायर होते हैं यार, कि ऐसे भी लोगों का लाइफ चेंज हो सकती है, ऐसे भी रिजल्ट आ सकते हैं. सो दैट कीप्स मी गोइंग. कि इसलिए वी हैव अ मैसेज कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक्चुअली पता लगे कि उनका पोटेंशियल क्या है. हमें अपना पोटेंशियल ही नहीं पता. हम लोग अपने आप को ही बहुत ज्यादा दबा के रखते हैं कि मेरे से नहीं होगा, मैं तो कर ही नहीं सकता. लाइक मेरी खुद की एग्जांपल है. मैं 2 महीने पहले माय वर्कआउट रूटीन. मैं पहले सिंपल जो एक बेसिक बॉडी बिल्डिंग वर्कआउट था वो करता था, लेकिन 2 मंथ्स पहले जब ओलंपिक्स हुए तो आई सो सम स्नैचेस, नई वर्कआउट रूटीन मैंने स्टार्ट की. तो स्टार्टिंग में मेरी भी बहुत गंदी वो थी, प्रोग्रेस थी, मतलब बहुत गलत तरीके से मैं टेक्निक कर रहा था. लेकिन मैंने चाहा कि मैं खुद अपने ऊपर काम करूं, और उसको लेके मैंने जब उसके ऊपर सीखा, उसके ऊपर वीडियोस देखी, कुछ कोचेस से कंसल्ट किया उसके बारे में, तो धीरे धीरे वो भी मेरी चीज ठीक हो गई. तो वो चीज जो वाई है वो बहुत जरूरी होनी चाहिए, आपकी क्लियर होनी चाहिए कि एक्चुअली में जो आप चीज कर रहे हो वो आप कर क्यों रहे हो. अगर मुझे पता ही नहीं होगा तो मैं वो चीज करूंगा नहीं लंबे टाइम तक. अगर मेरी गोल ही नहीं क्लियर होगा, मुझे क्या अचीव करना है, वो मैं ज्यादा टाइम तक कर ही नहीं पाऊंगा. तो वाई होना बहुत जरूरी है. और मेरी बात ये है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को फिट करूं, ताकि उनकी जो लाइफ में जो छोटे मोटे चैलेंजेस भी हैं, जो वो बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं, जिनकी लाइफ की क्वालिटी बहुत खराब हो चुकी है, जो एंजॉय नहीं कर पा रहे, तो वो भी हमारी तरह एंजॉय करें, राइट, हैप्पी रहें हर टाइम, और अपनी बॉडी को प्रॉपर यूज करें, पोटेंशियल देखें अपना क्या पोटेंशियल है, और उसको बिल्कुल प्रॉपर करें. Very cool, very cool. Lot of gold mine I'm getting from this call. And coming to the next question, because I also see a lot of questions coming down. And Shivali, I'll take this question to you. Saurav had asked here, how do you track your customers' progress? Yeah, or is it something that you do? And is it part of, could you just tell us about it?
So student progress is very important. I mean, I first think that like anybody who joins my classes, I ask them, what is your goal? Before they even ask me, what is the fees? What is this? What is that? I'm like, what is your goal? What do you want from my classes? What do you want from yoga? Why are you joining? Because you have to be very clear about your purpose. If you're not clear about your purpose, then you won't, be um, regular or be consistent. This works for anything in life. Like anything, you need to have a clear goal. So if they tell me their clear goal, okay, fine, weight loss is my goal, or flexibility, or I have this injury, and I write it down, I track, I plan workouts around them, around it, because it's a group class. You can't really, like you can't focus at one person's, like injury or so. But then I personally give them all the postures that they can do as variations instead of Okay. one pose that, that the rest of the class is doing. Plus, but I remember that this person has a limit, so I'll give them variation. So every posture has a variation. Everything is easy to do. Everything can be done with variations. And progress, like I said, I used to work in corporate, so I write emails. I used to listing things down. So I write things down. I have an entire diary of all my students ki aaj isne ye kara, aaj isne ye kara, aaj aisa. So that's how I track. And also, once you are in the habit of coaching, you recognize their potential, Hmm. Hmm. so recognize where all they can grow. So you also Correct. try to push them around it and work around it. And that's how you make them progress and track it at the same time. Makes sense. Makes So. sense. And there's one more question here. And Hitesh, if you could take this. Ki 1 meal a day with workouts, is it good or not? And Ashna has asked this question. And if you could. Sorry, what's the question? The question was, Ashna has asked, ki, is 1 meal a day diet, does that go with when I'm working out or not? And I think what One her meal a question, day. 1 meal a day, कि एक दिन में अगर एक ही मैं खाना ले रही हूँ और मैं साथ में वर्कआउट कर रही हूँ, is that a good thing? Or is that something you would suggest or not? 2-3 दिन अच्छा लगेगा, then you won't be able to pick you up, then you won't be able to get up, because actually में एक myth फैला हुआ कि we need to diet, we need to eat less to lose weight. I don't know what the goal is, लेकिन एक meal a day is not sufficient for anyone. अगर मैं सारा दिन बेड पे भी हूँ, I'm not moving a muscle, still I need my proper nutrition, my basic calories. And अगर मैं एक ही मील ले रहा हूँ, that won't be sufficient for me. That will actually detriment my health. वो मेरी सेहत और ज्यादा खराब करेगा. That will negatively affect my health. तो ऐसे भी कोई भी चीज हम किसी को नहीं फॉलो करनी है. We need to have a proper diet. We need to nourish our body. We don't need to starve our body. ये समझना पड़ेगा. हमें अपने आप को भूखा नहीं रखना. हमने अपनी बॉडी को प्रॉपर नरिशमेंट देनी, प्रॉपर न्यूट्रिशन देना. Correct. राइट. एंड वो आप चाहे 3 मील में पूरी करो, चाहे 5 मील में पूरी करो. इनफैक्ट आई हैव इवन समटाइम्स आई 6 to 7 मील, लेकिन वो डिवाइडेड है, मॉडरेशन मील्स हैं कि मेरा एक प्रॉपर न्यूट्रिशन मेरी बॉडी का पूरा हो. लेकिन अगर मैं एक टाइम खाना खाऊंगा मैं तो फिर मुश्किल हो जाएगा मेरा. तो आई कैन नॉट इमेजिन कि एक टाइम खाना खाने पे कोई कैसे सरवाइव कर सकता है लंबे टाइम तक. आई गेस कि आप 2 या 3 या 4 कुछ वेट लॉस कर लोगे, बट दैट इज नॉट वायबल. वो सस्टेनेबल नहीं है. वापस से बिंज ईटिंग या कोई भी आप ऐसी पैटर्न में फंस जाओगे, बट यू विल गेन यू मोर वेट. तो ये दैट इज नॉट सस्टेनेबल. आई वोंट सजेस्ट इट. No, it makes sense. Totally makes sense. I think, and that's a fair suggestion as well. To keep your calorie count, to ensure that you are having the bare minimum calories that is needed for you to get through the day. At least वो तो चाहिए, right? वहाँ पे. But also, I think we can keep continuing this discussion for a very long time. There's a lot of gyan यहाँ पे that we can get from you too. But keeping things in the interest of time, and also there's some more questions. There's a question that I wanted to ask you, Shivali, and which is around what are your thoughts about keeping fitness challenges? Is that an engagement tool, as an engagement tool, or is it just a fad, or could also become something that could be unhealthy also, like having a 15-day weight loss challenge, for example? So challenges are good to motivate you in the beginning. But in the end, you have to be able to sustain it by yourself. Like it has to be a lifelong habit. Challenges are good, of course. आपने 1 महीना follow करा, but then you have to make it a habit. You have to make it a lifestyle. So I believe in them. I usually take 1 month का challenge also. I used to do them a lot earlier, but now I feel कि challenge लेके you pick the best thing from it
and then continue with it. So continue with the challenge for the next few months, for the next, for lifelong. So I take up challenges like, waking up early. So earlier it was like, जब होता है, बहुत सारे लोगों को issue होता है to wake up early. But then of course, once it becomes a habit, you sustain it lifelong. So ऐसे मत लो कि, कि मेरे को abs बनाने हैं, 30 days abs there. ऐसा नहीं हो पाएगा. It will take time. You have to be aware. You have to recognize कि abs 30 days में बनते नहीं है. It's low body fat percentage. Body fat percentage कम होने में, of course, Hitesh knows. It takes time. It takes consistent exercise, consistent diet. So many things are involved. So challenges will keep you motivated. So take challenges which are for your benefit, like which are accessible. है ना? Not abs, not कि मुझे 20 किलो lose करना है. Challenges like I'm going to meditate, for example, meditate for 1 month, which is going to be helpful in the end, and then you can continue it lifelong. Or I'm going to be waking up early. So things like this help out instead of taking drastic challenges. So more challenges that, could convert things to a habit in my lifestyle. Yes, yes. Perfect challenges I should be taking. Yeah, not you really summed it up. that it has a goal and adds a burden to वो goal right. achieve करना. Stress नहीं चाहिए इतना life में, है ना? I think the end goal is not to have a lot of stress in life. And there were some questions on intermittent fasting also. Would you recommend that, Shivali? And yes. I'm intermittent fasting as in having a window to eat. I follow it myself, and it has been very helpful for me because, I mean, it's also like a yogic way. It also has been in our Vedas. Fasting has been in our culture. Fasting, but in a healthy way. ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं खाओ. Like I eat in a window. I eat in 8 hours का window, and I eat healthy diet, good food. Food which is fully balanced. And Hitesh will know this better. So yeah, I suggest it. But then सबका you have to know that सब एक जैसे नहीं होते हैं. सबको ये सूट नहीं करेगा. If you have thyroid, if you have PCOD, if you have different conditions, सबको सूट नहीं करेगा. किसी का भी एक का एग्जांपल लेके अरे उसने करा है तो मेरा भी हो जाएगा, ऐसे नहीं होता. You see what suits for you. You see what is best for you, and that's how you should be. You should be aware from inside what is working out for you, and then apply it in yourself. ठीक है, fair. And there's a continuation question. I just saw this on the questions that we were getting also. And Hitesh, maybe आप इसमें help कर सकते हो कि आज की डेट में भी diet plans, when it comes to it, ना, there are so many of them. Keto diet plan, vegan diet plan, meat-based diet plan, वो वाला plan. How does one choose कि मेरे लिए क्या सही है? How do, for example, मेरे को choose करना, how am I going to choose कि क्या what works, what does not? पहले तो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आवर बॉडी नीड्स, कि हमें एक्चुअली में क्या चीज मेरे लिए इजी है जिसको मैं अच्छी तरीके से फॉलो कर पाऊँ. लाइक फॉर एग्जांपल कीटो डाइट बहुत फेमस है या थी, आई डोंट नो, मतलब बहुत लोगों ने कीटो डाइट की. दे डोंट ईट कार्ब्स, दे जस्ट ईटिंग फैट्स, एंड बहुत ज्यादा हाई कंजम्पशन है फैट्स की, बट उसके अलग साइड इफेक्ट्स हैं. लो कार्ब में चले जाओ तो दे आर नॉट कंज्यूमिंग एनी काइंड ऑफ कार्ब्स, तो उसके अलग डिफिकल्टीज हैं. सो आई बिलीव कि वी नीड टू गिव आवर बॉडी ईच एंड एवरी न्यूट्रिशन. लाइक चाहे फैट्स है, चाहे कार्ब्स है, चाहे प्रोटीन है, चाहे फाइबर है, कोई भी चीज का एक्सेस नहीं लेके जाना. हर चीज को हमें बैलेंस लेके चलना है. तो उसका जो एक आई गेस नाम लेंगे कि प्रॉपर न्यूट्रिएंट डेंस डाइट रहेगी, न्यूट्रिएंट डेंस कैलोरी कंट्रोल डाइट, कि कैलोरीज भी कंट्रोल में रहे, हमारी न्यूट्रिशन भी हमारी बॉडी को प्रॉपर मिले, हर तरह का न्यूट्रिएंट बॉडी को मिले. चाहे आप उसको कोई भी नाम दे सकते हो, लो कार्ब हो, कीटो हो, कोई भी हो, बट आई बिलीव कि ये जो डाइट्स हैं ये हम लंबे टाइम तक फॉलो नहीं कर सकते. लाइक मैं कब तक अपना रोटी चावल छोड़ के मैं एंजॉय कर पाऊंगा, क्योंकि हर जगह हमारा जो स्टेपल फूड है इंडिया में दैट इज कार्ब्स, कि ज्यादातर हम लोग कार्ब कंज्यूम करते हैं. राइट, आई कैन रिड्यूस द कार्ब लेकिन आई कैन नॉट फुली मिनिमाइज द कार्ब, फुली डिमिनिश द कार्ब्स. राइट, तो एक बैलेंस ढूंढना बहुत जरूरी है. एंड उस डाइट को फॉलो करो जिसको आप लाइफ लॉन्ग अपने लंबे टाइम तक आप उसको फॉलो कर सकते हो. एंड आई डोंट थिंक दैट इज एनी डाइट वो हैबिट है कि आई नो कि मुझे इस मील में मुझे प्रोटीन भी चाहिए, मुझे फाइबर भी चाहिए, मुझे हेल्दी फैट्स भी चाहिए, तो आई विल प्लान माय मील्स अकॉर्डिंगली. लाइक आई पोस्ट अ लॉट ऑफ रेसिपीज जिसमें कि मैं वो रेसिपीज उस हिसाब से बनाता हूँ कि उसमें हर तरह का न्यूट्रिएंट अवेलेबल हो. राइट, उसमें प्रोटीन भी प्रॉपर हो, फैट्स भी हो, कार्ब्स भी हो, बिकॉज एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड फॉर बॉडी. आई कैनॉट, क्योंकि मैं सिर्फ प्रोटीन खा रहा हूँ या सिर्फ फाइबर ले रहा हूँ, सो दैट इज एन वायबल ऑप्शन, दैट इज नॉट सस्टेनेबल. सो वी नीड टू हैव ईच न्यूट्रिएंट, बिकॉज हर किसी का अपना रोल है. एंड टू फॉलो दोज, प्लान योर मील्स
कि मील्स हम सोच समझ के खाएं, माइंडफुल ईटिंग करें, ना कि जो आया मन में वो उठा के खा लिया, या ग्रोसरी शॉपिंग करने के तो चिप्स ले आया, बिस्किट ले आया, मैगी ले आया. सो दैट इज अ अनहेल्दी वे. तो हेल्दी वे इज टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, बिकॉज बहुत ईजी है. अगर हम थोड़ा टाइम लगाएंगे, अपने टाइम इन्वेस्ट करेंगे, तो वी कैन अंडरस्टैंड इट. एंड अगर उसको समझ के चलेंगे तो वी कैन eat healthy for a whole life, and we can stay fit for a whole life. Fair point, very fair point. And just to summarize that, I think it's not about the diet we are choosing, it's about the nutrition that is going inside our body. So as long as हम लोग उस पे conscious हैं कि हम we're taking the right nutrition, and that was same case I think with intermittent fasting and one meal a day. All these questions I think have a common answer कि focus on what nutrition is going in the body. We should just be conscious कि क्या जा रहा है हमारे body के अंदर, and that I think should help. But coming back to some questions that I have one question which was posted to me by a content creator and who also wanted to start fitness classes. कि यार between running fitness classes, between living your own life and posting content every day, because Instagram is very challenging that ways. It requires you to roz karo, ye karo, wo karo, right? And between all of this, how do you guys manage it? And is there a particular plan that you follow for content creation also, or does content creation end up getting thoda sa, little too much at times also? Very candid answers. I don't want thoda sa go and okay. It does get too much because her time you have to think of new things, and but honestly, planning does work. And whenever I have planned, I have managed to complete my my task for the day. So planning does help. And how I do it, like I plan like 7 reels for a week at one go. I shoot them all together, different kapdon mein. I have this idea ki okay, I have to make a reel for this, and then I scroll a lot on reels also ki kya abhi aa raha hai, naya aa raha hai. Then I put my idea behind it. You have to plan. अचानक से spur of the उसमें नहीं हो पाता. So I do that. कभी कभार मन नहीं करता, पूरा हफ्ता रील नहीं बनाया, ऐसा होता है. तो it's a process, you get into a flow, but yeah, planning is important. And it does get challenging classes के बीच में, कभी time नहीं मिलता. So you have to also be okay with it. ठीक है, नहीं हुआ, that's fine. Next week कर लेंगे. So that's what I feel. Yes, very fair answer. हितेश, आपका कुछ इसमें है? Is there a different strategy you follow कि आपके similar है? Yeah, definitely it's like planning your meals. अगर हम लोग कोई भी चीज करनी है तो we need to plan it. जैसे अभी right now I have 3 or 4 content में ready कि मेरे को ये content मेरा ready है, I can post for next 4 days. तो मेरे next 4 days होते हैं, right? तो अगर मैं 4 दिन कुछ भी ना सोचूं तो भी मेरा चलेगा. तो ये planning जो sorry, go on. Yeah. But is it like कि week में 1 day is when you sit and plan your whole week? Yeah, is it कि every day it's an everyday activity that you do? आइडियाज तो कहीं भी आ सकते हैं. सो व्हेनेवर एन आइडियाज आते हैं दिमाग में, चाहे हम कहीं भी बैठे हो, चाहे वो मैं नोट्स में लिख लिया, इसको बाद में इसको डिस्कस करेंगे, इसके बाद में ज्यादा सोचेंगे. तो आइडियाज कहीं भी आ सकते हैं. आई एम स्क्रोलिंग, अच्छा ये चीज अच्छी, इसको मैं अपने हिसाब से कर सकता हूँ. लाइक जो एक वीडियो आई थी गाने पे, तो मैंने उसमें अपना थोड़ा लगाया था देसी तड़का टाइप, तो मैंने उसको चेंज किया. और व्हेनेवर आई मेक एनी रेसिपी, मैं उसकी वीडियो बना लेता हूँ. दैट इज दोनों तरफ से, मतलब एक कंटेंट भी हो गया, मेरे खाने का जुगाड़ भी हो गया, राइट. तो ये दोनों चीजें साथ साथ में चलती हैं. यस, की दिमाग तो चलता रहता है. तो अब ये एक लाइफस्टाइल बन चुका है. पहले तो बहुत था कि अच्छा कंटेंट पोस्ट करना है, क्या करूं समझ नहीं आ रहा, पहले बहुत दिमाग लगता था. लेकिन अब लाइफस्टाइल हो चुका है. हम सिर्फ अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं. आई एम जस्ट डॉक्यूमेंटिंग माई जर्नी, एंड हो सकता है कि मेरी जर्नी से किसी को भी बेनिफिट मिल जाए, बिकॉज मैं वो चीज पोस्ट कर रहा हूँ जो मैं खुद कर रहा हूँ. मैं कोई वो चीज नहीं कर रहा जो मैं कर ही नहीं रहा, जो मेरे को पता ही नहीं, मैं उठा के पोस्ट कर रहा हूँ, जिस कॉपी पेस्ट. ऐसा नहीं, ओरिजिनल आइडियाज हैं. कुछ एक आइडिया हमने उससे सोच के, उससे इंस्पायर होकर हमने अपने हिसाब से उसको चेंज किया है. सो दैट इज जस्ट माई लाइफ स्टाइल नाउ. और इतने टाइम से पोस्ट कर रहा हूँ, तो अब तो वो आदत ही पड़ गई है कि हाँ पोस्ट करना है. लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आई एम लॉट ऑफ बिजी, की बहुत कस्टमर्स आ गए या यहाँ पे बहुत मीटिंग्स हो गई ऑनलाइन, तो पूरा स्टोरी भी नहीं डालने का टाइम लगता है. बट लाइक शिवाली सर, इट्स ओके, कोई इशू नहीं है, कल कर लेंगे, राइट. Fair. Very cool. मुझे आप दोनों से बात करके ना, I think what I have, the biggest takeaway for me here is, and I think this, it's what I would want everyone else also to understand and know, that plan, prepare, but predefined strategies might not always work. It is about documenting your journey, as they said, and living, sharing what you are doing every day, building that trust, being original about with your people. And I was taking some notes of some qualities that we consistently talked about in our questions.
And I think it's very amazing that the qualities that come out are all very basic qualities that one needs to be a successful fitness creator. Those qualities being consistency, which you started about in the starting, Hitesh, and then patience. Shivali, you touched about that, and then you all talked about being genuine in what we are posting to our audience, being original in kind of a content. That content will be, people will try like that content. If you're original, if you're aware about what we're teaching, what we're doing, we will, and focusing on a few students at a time, starting slow, being patient around that, what testimonials, the whole word of mouth, everyone will start relating to us more, will all grow over time. One very cool hack by you, Shivali, there about spotlighting people. And we've taken a note and we were going to add that in the product. And then, also not doing challenges. Challenges are cool on Instagram, but not doing them to do a hard goal for yourself, to define a hard goal for yourself, but to do things that you want to become a habit in your life. And also, I know we can go on. I'd love to go on for a very long time. But I would take a pause at this stage. And, in the interest of time, we've continued for almost an hour. But any going away message from each of you, specifically to creators who are wanting to, start online classes, online courses, any last message? Yeah, I think just start, you don't think about it much and be consistent. Trust yourself and just have a go, just trust yourself. It's all going to work out. Yes. So that's what I have to say. Very good. Yeah, I think first step is the hardest. Like in first step, अगर आपने एक step ले लिया, then it is really easy, and you get a lot. You can follow a lot of like-minded people जो जिनके जैसा बनना चाहते हो. You can follow them. You can learn from them. And एक अपना 1, 2, 10 कोच बनाइए जिनसे आप सीख रहे हो, and try to just learn from them and duplicate things. So मतलब भरा पड़ा आजकल तो कंटेंट हर जगह अवेलेबल है, हर तरह का कंटेंट अवेलेबल है, चाहे यूट्यूब है, गूगल है, इंस्टाग्राम, फेसबुक है. तो जस्ट लर्न फ्रॉम देम, कीप अप्लाइंग, और रिजल्ट तो आएगा ही आएगा. इफ यू कंसिस्टेंट, रिजल्ट आएगा ही आएगा. Right. One more thing I want to add here, that find a mentor, like mentor as in who you can trust, and like Hitesh said, like try to replicate and also try to get inspiration from them. So follow as much as you people you can follow, and also if you can attend their classes, attend their coaching, so that you also get an idea and an experience, and find a mentor. Khali akele kuch nahi ho pata. I have teachers for everything till date, so it really helps and it works, and you constantly learning also. So that's what you need in your life, constantly learning and trying to upscale your skill. Yes. So thank you so much, and great messages, great information, great gyan for me personally as well. But I'm sure a lot of good knowledge for a lot of folks who are watching this. What we'll also do is we'll document this conversation in the form of an IGTV video on our Instagram, but we will also be writing a blog which goes out to a broader creator audience as well. Fitness creators will be writing a blog on the learnings that we've gotten from this audience, and then we'll be sharing that across as well. So that's it from my side. I do hope कि हम आप लोगों के साथ we are able to engage sometime again and do a lot of such candid conversations. Thank you so much for coming, and thank you for your time. Thank you so much. Thank you, Swapnil. It was wonderful meeting you all, and it was. We are ending this conversation when Instagram gave me a prompt that 20 seconds are left to your Insta life. Okay. Thank you. Bye. Bye.